As a Chief Justice, my endeavor will be strengthen the foundation of the High Court, transparency, sustainability, and efficiency. Justice must not only be done, but must also be seen to be done. Together, we must ensure that this High Court, continue to remain a temple of justice, where every citizen, irrespective of his her status, is assured of protection of rights and liberties. नमस्कार, मैं आरती। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पवन कुमार बजंत्री और एडवोकेट जनरल पीके शाही ने संयुक्त रूप से कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से सरकारी अधिवक्ता और विभाग सीधे सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और देरी कम होगी। इस ऐप के लॉन्च होने से न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ और सरकारी विभागों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हो जाएगा। चीफ जस्टिस पवन कुमार बजंत्री ने इस अवसर पर अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को शुभकामनाएं दी और आभार जताया। एडवोकेट जनरल पीके शाही ने बताया कि यह ऐप न्याय प्रक्रिया में काफी लाभ पहुंचाएगा। इस ऐप लॉन्चिंग को लेकर पवन कुमार बजंत्री क्या कह रहे हैं, देखिए। Of my High Court, distinguished law officers, members of the bar, and deeply touched by the generous words felicitation extended to me today by the Office of the Advocate General. I consider it an honor and solemn responsibility to assume the office of the Chief Justice of the Great High Court of Patna, which has a glorious legacy in the judicial and constitutional history of our nation. The Office of the Advocate General has also played a vital role of assisting the court in dispensation of justice, in presenting the viewpoint of the state with a fair and candor, and ensuring that balance between the governance and the constitutional right is maintained. I value this institution as an indispensable partner in justice delivery system. As a Chief Justice, my endeavor will be strengthen the foundation of the High Court, transparency, sustainability, and efficiency. Justice must not only be done, but must also be seen to be done swiftly and fairly. In this journey, I look forward to the continued cooperation of the bar and in the particular office of the Advocate General. Together, we must ensure that this High Court, continue to remain a temple of justice, where every citizen, irrespective of his her status, is assured of protection of rights and liberties. I express my gratitude once again for the warm felicitation and assure my unwavering commitment to uphold the dignity of office. Thanking you. तो आपने देखा कि पवन कुमार बजंत्री ने इस ऐप के बारे में क्या बताया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे एकदम कड़क। साथ ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी खबर छूट ना जाए। धन्यवाद।